Yeah, Ekta, you were sharing something. Can you share it again so that people know the uh, this thing? There's a Yeah, yeah. yesterday I just told you about my sweet tooth, na? So you guided me. So yesterday I got a mithai box, and I'm so fond of all mithais and everything. So instantly I just distributed to everyone, to all the children, laborers and maids, servants, so that not even a single piece is left with me. Okay. Otherwise, I would have grabbed two, three pieces easily. Okay. So my question to you is, आप like क्यों इसको? Why did you bring that? My No, question to no, you. it's no, no, no. It was like किसी का शादी का आया Okay. था. It's शादी my का। favorite mithai. So Okay. I तो just didn't wait for anything else because as soon as I open it, na, I used to take two, three pieces and I used to eat. So Yeah. instantly I just distributed so that to make Good. it a start. Good. Good. So we should clap for Ekta that she consciously took that step not to eat that mithai, which is I didn't so even called. allow others to eat. Okay. But by the way, I don't suggest you immediately start preaching to your family members or to your children because that doesn't work in the long run. Set an example for them. Set an example for No, them no, that is. my children, they don't eat meat, but my husband, due to me, like I have a sugar that, I always used to tell him, कुछ नहीं होता, थोड़ा सा खा लो, because, he's not fond of meat, but just because of me, उनको भी मीठे का शौक लग गया. I always used to force, कोई नहीं, थोड़ा सा खा लो. यस, तो ये बोलते हैं ना थोड़े से कुछ नहीं होगा, इसको हम लोगों ने नाम दिया है। तो एक पूजा रुंगटा करके मेरी स्टूडेंट है, तो शी वाज द इन शी इन्वेंटेड दिस टर्म, एक टुकड़ा। ओके, सो वी वेंट टू अ पॉटलक, हम लोग का शरण का एक पॉटलक होता है यहाँ पर। सब हेल्दी हेल्दी खाना आता है, द सो कॉल्ड हेल्दी बिस्किट था उधर। एंड बोली एक टुकड़े में क्या होता है, तो मैंने उधर इसको नाम दे दिया दिस एक टुकड़ा मेंटालिटी ना। सो दिस इज जस्ट अ वीक माइंड्स एक्सक्यूज। ओके, Right. एक टुकड़े में कुछ नहीं होता है, तो एक टुकड़ा सुबह, एक कप चाय में कुछ नहीं होता है, एक बिस्किट में कुछ नहीं होता है, एक चिप्स में कुछ नहीं होता है। अरे एक बार तो केक खाएंगे ना, आज उसका बर्थडे है तो बाहर का, एक बार में क्या होता है। पर वो वन 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 मल्टीप्लाई करके वो कब वो इतना बड़ा रूप ले लेता है कि वो हमारे लिए बीमारी Yeah. ले आता है। तो सी हमें समझना पड़ेगा दैट व्हाट डज शुगर डज टू आवर बॉडी। ओके, तो पहली बात तो है ना, सी स्वीट इज नॉट अ बैड थिंग, द स्वीट टेस्ट। अगर वो इतना खराब होता ना तो नेचर उसको बनाता ही नहीं। Okay? So there are so many things in nature that are sweet. So don't get yourself wrong कि कड़वा चीज खाने से, बिकॉज ये भी एक मेंटेलिटी लोगों की कि मैं करेला खाऊंगा तो मेरा डायबिटीज ठीक हो जाएगा, या मैं कड़वी चीजें खाऊंगा तो मेरा वजन कम हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो अ मिथ। ओके, तो अगर कोई भी चीज खराब होती है ना, नेचर उसको बनाती नहीं, जो नेचुरल चीजें आती है। तो पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट डज स्वीट डज टू आवर ब्रेन। व्हाई डू वी क्रेव फॉर स्वीट? एक तो है जब हम पैदा होते हैं। ओके, तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी पुट इन अवर माउथ? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? क्या आ जाता है हमारे माउथ में? Honey, नो। milk, Mother's मदर्स milk. mother's मदर्स मिल्क। milk. Yeah, मदर्स मिल्क, yeah. मदर्स मिल्क, Mother's I मदर्स mean, मिल्क। milk. Yes, mother's milk is the first thing. What is mother's milk made of? It is glucose. Nothing. That is glucose. That is sweet. That is sweet. उसके लिए बच्चे जो होते हैं माँ का दूध इतना क्यों पसंद करते हैं? वे मदर तो बचपन से ही बोलते हैं ना दैट इट इज इनग्रेन्ड इन अवर सबकॉन्शियस की स्वीट चीजें हमें पसंद होती है। तो कहीं ना कहीं वी डेवलप अ स्वीट टूथ when we are a infant, not even a child, as an infant, because mother's milk is basically glucose. It is readily absorbed in the body, and वो हमें अच्छा लगता है, and we develop a sweet tooth therein. Okay, now what the food companies did, उन्होंने पिकअप कर लिया वहां से कि चलो इनको स्वीट टूथ पसंद है। तो व्हाट डज द कैडबरी एड सेज, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। तो हमारा कंडीशनिंग जो हो रहा है, एक तक नहीं, म्यूट योरसेल्फ या प्लीज। या, तो हमारी कंडीशनिंग जो हो रही है ये बचपन से कि खाने के बाद कुछ मीठा तो होना ही चाहिए। जैसे आपने बोला कि भगवान को भी तो हम मीठा ही चढ़ाते हैं। बोलते हैं कृष्ण भगवान तो मलाई खाते हैं, तो क्या 5,000 साल पहले शुगर की फैक्ट्रीज थी? हाँ, वो हम नहीं देखते हैं ऐसी कि क्या कृष्ण भगवान क्या रिफाइंड शुगर खाते थे? हाँ, तो वी डोंट थिंक लॉजिकली, वी जस्ट गो एज पर अवर कंडीशनिंग, अवर जो स्वीट टूथ वी डेवलप एज अ चाइल्ड। बिकॉज जैसे मैंने कल बताया ना दैट शुगर व्हाई इट इज सो एडिक्टिव। तो पहली बात तो हमें समझना पड़ेगा एडिक्शन क्या होता है ये। ओके, तो एडिक्शन इज नॉट कि कोई दारू पी रहा है तो वो खराब है, या कोई सिगरेट पी रहा है तो वो खाली वो खराब है, या सोशल मीडिया का एडिक्शन वो खराब है। इवन फूड, इनफैक्ट आई बिलीव फूड इज द बिगेस्ट एडिक्शन दैट वी हैव एज ह्यूमन बीइंग्स। आप बोले ना कि यार एक दारू बस दारू छोड़ सकता है, कुछ छोड़ सकता है, कि आप खाना कभी छोड़ सकते हैं? बट व्हाट वी हैव डन इज फूड को भी हमने एडिक्शन बना के छोड़ दिया है, दैट इफ आई डोंट गेट दिस
हमें चक्कर, सबसे बड़ा एडिक्शन क्या होता है? चाय का एडिक्शन, चाय एंड कॉफी, कैफीन, दैट वी हैव। कि लोग मुझे बोलते हैं मुझे चाय नहीं मिले तो मेरा दिन स्टार्ट ही नहीं हो सकता, मेरा दिमाग ही नहीं चलता है, चाय नहीं होता है। तो इज दैट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बैड थिंग that you are so much dependent on that cup of tea. Even I was like that few years ago, that I needed 2 cups of tea in a day, one in the morning, one in the evening, to just मेरा काम दिमाग काम करे, उसके लिए मुझे चाहिए था वो। So these addictions that are there, जो patterns हमारे develop हो रहे हैं because of addictions, this spirals onto the other areas of our life also. So it is very important to have, not I would say control, don't try to control your taste buds, but have a proper understanding. मैंने जैसे कल बताया ना, it should not be a suppression. ओके, तो कल तो चलो एक तो आपका, यू अटेंडेड द क्लासेस, मैंने इतना आपको कुछ बताया और आपने एक दिन नहीं लिया, बट व्हेन यू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट, जो मैंने बताया कि इट हिट्स द सेम सेंटर्स इन द ब्रेन, जो कोकेन जिसको हिट करता है, इट हैड द शुगर हिट्स दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ओके, एंड व्हाट डू यू थिंक, शुगर जो आता है, जो हम चीनी खरीदते हैं, इज दैट नेचुरल और अननेचुरल? व्हाट डू यू गाइस थिंक, इज इट नेचुरल और रिफाइंड? Refined. It is refined. It is refined. Obviously, it is refined because it doesn't come from nature. तो शुगर आता है शुगर केन से, शुगर केन को वो लोग अलग अलग प्रोसेसेस करते हैं, उससे मोलासिस निकाल देते हैं, एंड उसका जो फाइन बचता है उसको वो लोग इस तरह से स्टोर करते हैं। तो इसकी भी हिस्ट्री है कि कैसे शुगर का इन्वेंशन हुआ। ओके, सो दिस वाज बेसिकली इन्वेंटेड बाय द ब्रिटिशर्स। बोलते हैं ना, शुगर का जो इन्वेंशन हुआ था, ब्रिटिशर्स ने किया था। व्हेन दे केम टू इंडिया, व्हेन दे सॉ कि इधर इतना शुगर केन प्रोड्यूस हो रहा है, सो दे फाउंड आउट अ वे टू मेक अ बिजनेस आउट ऑफ इट, कि चलो इसका भी हम बिजनेस बनाते हैं। एंड बिकॉज शुगर केन कुछ दिनों में खराब हो जाता है, बट उसको जब हम रिफाइन कर देते हैं, जब प्रोसेस कर देते हैं, उसके जब क्रिस्टल्स बना लेते हैं, दैट कैन बी स्टोर्ड फॉर मंथ्स एंड ईयर्स ऑल टुगेदर। ओके, नो बडी थॉट अबाउट द हेल्थ इफेक्ट्स की उसमें क्या होगा नहीं होगा, बिकॉज अवर बॉडी, नॉट ओनली शुगर, एवरीथिंग दैट इज रिफाइंड, इवन आटा। ओके, डोंट वरी, आपको आटा खाना छोड़ना नहीं है तो आज, आज से इवन आटा, जब क्या होता है, जब हम गेहूं को पीसते हैं, तो उसमें जितना भी उसका जो नेचुरल फॉर्म है, वी आर ब्रेकिंग दैट डाउन, उसका हम सत्यानाश कर दिए, उसको आटा बना के हम क्यों स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो हमारी जो टेंडेंसी है ना टू स्टोर फूड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि चलो बहुत दिनों तक जो खराब नहीं होगा, दैट बिकम्स पॉइजन फॉर अवर बॉडी। सो दिस इज नॉट ओनली शुगर बट एवरीथिंग दैट इज अननेचुरल। हम क्यों बोलते हैं होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट? व्हाई डू वी से दैट? वी डोंट से दैट वीगनिज्म इज द आंसर, बिकॉज फ्रेंच फ्राइज भी वीगन है, कोक भी वीगन है। वीगनिज्म इज नॉट द आंसर। एनीथिंग विच, जिसकी प्रॉपर्टी चेंज कर दी गई है, योर बॉडी उसको एक फॉरेन सब्सटेंस जैसा लेता है, और बॉडी इट्स अ फॉरेन सब्सटेंस। व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक ना, जब आप ये लॉजिक समझ जाते हैं कि इसका नेचुरल फॉर्म चेंज कर दिया गया है, एंड वो आपके शरीर में डालते हो, तो शरीर उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहा है। तो क्या होता है, व्हेन यू पुट समथिंग रॉन्ग फ्यूल इन द बॉडी, कि आप पेट्रोल गाड़ी में डीजल डालोगे, तो शायद कुछ देर के लिए गाड़ी वो चल जाए, पर मे भी 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ओके, तो अवर बॉडी, गॉड हैज मेड अस सो रेजिलियंट कि 15-20 साल, 25 साल तो वो, बिकॉज हमारी बॉडी इतनी एल्कलाइन होती है, व्हेन वी आर बोर्न अवर बॉडी इज एल्कलाइन, तो धीरे 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 उसको एसिडिक बना देते हैं, 20-25 साल में वो बीमारियां चालू हो जाती है। जैसे आजकल इतने सारे यंगस्टर्स आते हैं, टीनेजर्स आते हैं, दे आर हैविंग ऑल दिस हार्मोनल इश्यूज, ऑल द ऑटो इम्यून इश्यूज। व्हाई? बिकॉज बचपन से हम बच्चों के शरीर में सारी रिफाइंड चीजें डाल रहे हैं, कि चल आज बर्थडे है तो केक तो खाएगा ही, अरे बच्चा है तो एक में कुछ नहीं होता है। देखिए हम बच्चों के साथ कर क्या रहे हैं आज के दिन। तो दीज आर फॉरेन सब्सटेंसेस दैट वी आर पुटिंग इनटू द बॉडी, जो बॉडी समझता नहीं है क्या हो रहा है, एंड इट टेक्स अवर एंटायर इम्यून सिस्टम फॉर अ टॉस। आज से बोलूं 15-20 साल पहले लोगों को पता नहीं था व्हाट आर ऑटो इम्यून कंडीशंस, एंड नाउ एवरीबॉडी जिससे बात करता हूँ, ही हैज डन अ पीएचडी इन ऑटो इम्यून। लगता है कि मैं किसी लिटरल गूगल, थैंक्स टू गूगल, मुझे लगता है मैं डॉक्टरों से बात कर रहा हूँ, ऐसा लगता है उनको सारा मालूम है। दे नो एवरीथिंग अबाउट द डिजीज, अबाउट द मेडिसिन, अबाउट द कंटेंट्स, व्हाट इज द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, व्हाट इज टीएसएच, व्हाट इज थायरॉक्सिन, सबको सबने स्टडी कर लिया है, सबको वो पता है, बट ये नहीं पता है कि हो कैसे है वो। ओके, सो माय, आई वुड नॉट से, आई वुड नॉट प्रिस्क्राइब कि आप शुगर खाना छोड़ दो या नहीं छोड़ो, बट ये बात समझ जाइए, द रेशियो ऑफ नेचुरल टू अननेचुरल फूड्स, द रेशियो ऑफ फूड्स इन द ओरिजिनल फॉर्म, इन द रिफाइंड फॉर्म, जितना रेशियो नेचुरल की तरफ रहेगा उतने आप हेल्दी रहने वाले हैं। जस्ट थिंक बिफोर पुटिंग एनीथिंग इनटू योर बॉडी, वी आर सो प्रेशियस।
मैं तो बोलता हूँ ना, आप जीवन जांच के सेशन में आइए, आप जो कई बार लोगों की बीमारियों की बात सुनते हैं या लोगों की तकलीफें सुनते हैं ना, यू रियलाइज दैट हम जो हैं, वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव अ बॉडी विच इज वर्किंग, एंड वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि चलो आज तो सही चल रहा है, आज तो एक खा लो, आज क्या होता है कि एक एक टुकड़े में कुछ नहीं होता है। बट दैट एटीट्यूड ना, जो एक टुकड़ा वाला एटीट्यूड जो होता है, दैट spirals onto the other areas of life also. That I heard a quote from Jim Quick. So he's a brain coach, Jim Quick. And what he said that really hit me. I heard that in 2017, that how you do anything is how you do everything. Very powerful quote. How you do anything is, तो बोल रहे हैं ना, the key to success lies in the small details. ओके, सो यू ईट अ गुड सैलड, अ गुड मील, बट बाद में बोलते हैं ना चलो इतना मैंने हेल्दी खाया, थोड़ा अनहेल्दी चलता है। दैट थोड़ा चलता है वाला एटीट्यूड ना, दैट नेवर लाइक, बोलते हैं ना कि allows you to unravel your true potential as a human being. अच्छा, मैं क्यों बोलता हूँ these classes are not only about exercise. I want you, every one of you, to be the best version of yourself. And if you cannot control what you're putting into your body, forget about doing the big things in life. अगर आपका आपके पैलेट पे कंट्रोल नहीं है, विच इज द मोस्ट बेसिक थिंग, एंड आफ्टर सो मच ऑफ कंडीशनिंग ऑफ लास्ट 1.5 years, इतना मैंने आपको बोला, एंड इफ यू स्टिल स्टे, सो दिस इज फॉर द ओल्ड स्टूडेंट्स, नॉट फॉर द न्यू वंस, इफ यू स्टिल थिंक दैट यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर योर पैलेट, और थोड़ा चलता है एंड स्टिल गेटिंग अनहेल्दी स्टफ इनटू योर होम, फॉरगेट अबाउट डूइंग द बिग थिंग्स इन लाइफ। जैसे मैंने बोला था ना, जस्ट थिंक ऑफ योर लाइफ एज वेरी डिवाइन. Don't just think from the realm of the physical or from the perspective of yourself or your family or your business. That is now we are meant to live, because we get so many things from nature. We get so much abundance from nature in so many ways, because we are not independent, we live in an interdependent reality. सब agree करेंगे that we are dependent on various other things in nature for our survival. तो हमें कुछ नेचर से अगर मिल रहा है, तो our it's our duty to give back to the universe. वो तो हम सोचते ही नहीं है, हम तो बस, हम वी आर लाइक सेल्फिश बीइंग्स, हमें तो हमारी पड़ी, हमारे परिवार की पड़ी है, बाकी दुनिया गई तेल लेने. एंड दिस इज द रीजन वी सफर एज ह्यूमन रेस. टुडे वी आर सफरिंग. आज बोलते हैं ना, द हैप्पीनेस इंडेक्स इज एट द लोएस्ट. बोलते हैं ना, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन, एंड इंडिया का जीडीपी सबसे हाईएस्ट है. दैट व्हाई आर ऑल द हॉस्पिटल्स फुल? अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, तो खुशी बढ़नी चाहिए, बीमारियां जानी चाहिए. वी डोंट थिंक बियॉन्ड द रेलम ऑफ अवर ओन, मतलब कि हम इतने सेल्फिश बींग्स बन गए. बट यूनिवर्स को आप कब दे पाएंगे? व्हेन यू विल बी एबल टू डू दैट? एनीबडी? व्हेन यू विल बी एबल टू गिव बैक टू द यूनिवर्स. जो मैंने कल यूनिकनेस की बात करी थी इन द सेशन, दैट वी आर यूनिक, वी हैव दैट यूनिक पोटेंशियल विद इन अस. व्हेन विल यू एबल टू डू दैट? देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर. एनीबडी? इट्स अ वेरी डीप थॉट, इट्स अ वेरी डीप थॉट. कब हम कर सकते हैं? इन रिलेशन टू टूडे सेशन, चलिए हिंट दे रहा हूँ आपको. इन रिलेशन टू टूडेज कॉन्सेप्ट पार्ट, when will you be able to showcase your true potential to the universe, or whatever interactions you have with anyone? देखिए, Please what is surrender. not surrender in relation to today's, मैं बोल रहा हूँ. Acceptance. See, there are many things, there are many concepts कि हम कैसे कर सकते हैं, but in relation to today's class मैं पूछ रहा हूँ, how can you do that? When we are happy ourselves, Thinking. या मुक्तारी, sorry. when we are happy ourselves, When you happy ourselves, yes, but in relation to today's class, happiness की बात ही नहीं करी हमने. या नवनीत? Taking care of ourselves, Taking care our of ourselves, health, how do you take care our of yourself health, in real health? Yes, but how do you take care of your health? Following the laws of nature. Sorry, following the laws of Following the nature. laws of nature. Yes, but having control of your palate, that is the main thing. जो आज की क्लास के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ मैं, that why it is important, these small things. Okay, so next time when you एकता, next time जब आप वो मिठाई का डब्बा छोड़ दो ना, you think that you are not eating that for a larger cause. See, a slight change in perspective, you will never touch junk food in your life. मुझे लोग बोलते हैं, कल मैं गया ऑफिस गया, आई वेंट टू ऑफिस आफ्टर लॉन्ग टाइम, बिकॉज आई नॉर्मली वर्क फ्रॉम होम और फ्रॉम रिमोट लोकेशंस. एंड देयर वाज अ क्लाइंट मेरे सामने, वो भगत ताराचंद का वो 3 रोटी मस्त बटर मस्का वाला, एंड दैट आलू गोभी की सब्जी फुल मसाले एंड बटर घी वाली मेरे सामने है. मतलब मनीष जी, कुछ नहीं होता, थोड़ा तो टेस्ट करिए.
मैं घर से मेरा दाल चावल सब ले गया था, माय ब्राउन राइस एंड दाल एंड वेजिटेबल एंड सैलेड वाज देयर। अरे ये बीमारी वाला खाना कौन खाएगा? आई वाज लाइक इट इज नॉट द टाइम टू गिव ज्ञान। आई जस्ट टोल्ड दैट आई एम जस्ट ऑफ आउटसाइड फूड फॉर सम स्पिरिचुअल रीजन। मैं बहाने हमेशा सोच के जाता हूँ व्हेन आई गो टू दिस मीटिंग्स। मेरे पास तो मालूम है प्रेशर होने वाला है, तो मेरे पास हमेशा बहाने रेडी होते हैं, या तो फास्टिंग है मेरा, या मैं एनो वन मील डाइट और ऐसा कुछ चल रहा है मेरा। ओके, तो मैंने क्यों उसको टच नहीं किया? वाई? क्या मेरे हेल्थ के लिए खराब है इसके लिए? वो तो कभी कभार बोलेंगे, कभी कभी चलता है, कुछ नहीं होता है, सच में कुछ नहीं होगा। If you eat a junk food once or twice a week, nothing is going to happen to your health. But my, I know that how invaluable my health is for the larger purpose. That me being a health coach, being a teacher, I can, if I live, suppose 20 years longer, अगर मैं 100 की जगह 120 साल जीता हूँ, 20 years I will be able to serve the universe. I will be able to serve the humanity. Make this the reason for not eating junk food. बोलते हैं एक बहुत strong why होना चाहिए आपका, that why do I need to get up at 4 a.m. every day and study for 2 hours? क्या काम है मुझे पढ़ने का? Why should I study? I have so much knowledge. मैं 15 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैंने इतने सारे courses already किए, but why do I keep improving myself? The why is very strong. So when your why ekta is strong now, of not eating that sweet, because ekta is not here to just take care of her family or just take care of her own self or her children. Ekta is here for a cause which is beyond herself. Connect to that cause. And then see आप जिंदगी में कभी वो मिठाई को या हाथ नहीं लगाएंगे, बिकॉज यू नो दैट रिम्पल कितनी इनवैल्यूएबल है, कि रिम्पल और बलजीत आंटी को अपना शरीर का ध्यान रखना जरूरी क्यों? क्योंकि जीवन जाज पूरा वो अपने कंधे पे संभाल रखी। तो एक आप कनेक्ट करिए एक लार्जर कॉज के साथ। अगर आपको बोलते हैं ना कि एक हेल्दी जीवन जीना है, देर इज नो अदर वे टू, बोलते हैं ना, स्टे दैट डिसिप्लिन। वो बोलते मनीष तुम्हें डिसिप्लिन कैसे आ गया यार? हाउ डू यू लाइक डोंट क्रेव ए गुलाब जामुन सामने एंड यू डोंट टच इट? मैंने 16 साल से गुलाब जामुन को हाथ में लगाया, मुझे मालूम है कि व्हाट फ्राइड फूड डज फॉर द ऑटो इम्यून कंडीशन। कि अगर आपके शरीर में अगर इन्फ्लेमेशन ऑलरेडी है, वो फ्राइड फूड क्या करता है अंदर जाके। आई हैव अंडरस्टूड द रिसर्च बिहाइंड इट। आई डोंट क्रेव फॉर दैट एट ऑल। सी आई ईट स्वीट्स, मैंने बोला ना, आई हैव स्वीट, स्वीट इज नॉट अ बैड थिंग। हैव डू सम रिसर्च। शरण के इतने सारे कोर्सेज होते हैं, एक कोर्स कर लो, 1000-1500 रुपये लगता है, लाइफ इज सॉर्टेड। ऑयल फ्री खाना बनाना सीख जाओ, लाइफ इज सॉर्टेड। मिठाइयाँ मिलती भी आजकल तो मार्केट में मिलती भी है, यू गेट गुड डेट बेस्ड स्वीट्स, हैव those। कौन मना करता है? दैट डजंट हार्म एट ऑल। हैव इट फ्रॉम अ गुड सोर्स। यू कैन मेक इट होम ऑल्सो, यू कैन गेट इट मेड फ्रॉम समवन। तो हमें मीठा नहीं छोड़ना है, हमें शुगर छोड़ना है, वो आप समझिए। ओके, एंड क्यों छोड़ना है कौन बताएगा? नाउ नाउ द रीजन इज क्लियर व्हाई वी शुड नॉट put junk into our bodies. Who will conclude the session today? Why we should not put junk into our bodies? Because we have to serve the larger purpose. Some larger purpose. भले वो पर्पस आज आपको क्लियर हो नहीं हो, बट यू थिंक ऑफ योर सेल्फ एज डिवाइन। आप बोलिए ना, भगवान को कभी कोई जंक फूड चढ़ाएगा क्या? हाँ? हम एकदम प्योर चीजें जो घर में बनती है, फ्रेश चीजें, हम भगवान को वो चढ़ाते हैं, राइट? तो हमारा शरीर क्या फालतू है हम इसके अंदर कुछ भी डालते हैं? ये भी तो गॉड्स क्रिएशन है। तो दो तीन चीजें याद रखिए, एक तो नेचुरल अननेचुरल वाली प्रोसेस, नेचुरल फूड्स एंड रिफाइंड फूड्स। बॉडी उसको कैसे एक फॉरेन सब्सटेंस जैसे ट्रीट करता है। इट, जो ऑटो इम्यून बीमारियां हो रही है इतनी, उसका बहुत बड़ा कारण रिफाइंड फूड है विच इज नॉट नेचुरल, बिकॉज इम्यून सिस्टम थिंक्स ऑफ दिस इज अ फॉरेन, एंड इम्यून इतना एक्टिव हो जाता है ना, तो वो ऑटो इम्यून बीमारियां स्टार्ट होती है। So just shift, gradual shift करिए। Don't be like in a hurry कि यार मुझे आज का चेंज करना है, and you start taking stress of कि मैं कैसे चेंज करूँ। One step at a time, one meal at a time. Don't think too far ahead, and don't judge yourself if you are not 100% right now. Perfectionism is not the answer. Progress is the answer. ओके, तो एक प्रोग्रेस भी, ग्रेजुअल प्रोग्रेस भी होगा ना, व्हेन यू कम टू दिस क्लासेस एंड व्हेन दिस constant reinforcement happens, and when you find a purpose which is beyond yourself now, then you are on your own, then you don't need any classes, don't need any reinforcement, then you become like me, जैसे your life becomes your message, your life becomes your message, you start just from a different, बोलते हैं ना, zone altogether, you are in your own zone altogether, that nothing outside keeps affects you. How beautiful would that be? कितना सुंदर होगा हमारा जीवन अगर हम, इफ वी कैन लिव फ्रॉम दिस substratum, this should be your baseline, that I am here for a larger purpose. Everything gets sorted. बोलते हैं ना, there is a wise self within us. हमारे अंदर एक इमेच्योर बच्चा भी है,
और एक वाइज सेल्फ है. ओके, सो वेन एवर यू थिंक ना दैट योर माइंड इज वॉन्डरिंग, बिकॉज माइंड वॉन्डर्स, माइंड कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा, ऊपर नीचे होगा. इतना स्टिमुलस आएगा, रिलेटिव्स आएंगे, फ्रेंड्स आएंगे, टीवी पे देखोगे, कल किसी ने कुछ बोल दिया, कल किसी ने बोल दिया कि इंटरमीडिएट फास्टिंग से हार्ट अटैक आ जाता है. गो बैक टू योर वाइज सेल्फ, गो बैक टू योर वाइज सेल्फ, दैट हाउ डिड यू फील व्हेन यू एट इन अ विंडो. आपको कैसा लगा? यू डोंट नीड अ रिसर्च टू से दैट. हाँ, आई फेल्ट गुड, माई लॉस्ट माई वेट, माई लिपिड्स केम डाउन, माई. तो ऑब्वियसली रिपोर्ट्स कैन बी बायस्ड, पैसा खिला के भी रिपोर्ट्स होते हैं. डोंट थिंक दैट ये सारे जो एसोसिएशंस है, कैंसर एसोसिएशन, हार्ट एसोसिएशन, उनके स्पॉन्सर्स ही केएफसीज एंड ऑल द मैकडोनल्ड ऑफ द वर्ल्ड, दे आर द स्पॉन्सर्स ऑफ देम. सो डोंट थिंक दैट जो रिपोर्ट्स आ जाती है मीडिया में, दैट दिस मेडिकल एसोसिएशन ने बता दिया कि ऐसा है, दैट इज नॉट द ट्रूथ. Listen to your inner guru. Experience it for yourself. Talk to your wise self. What your wise self is saying. That why we should not eat after a sunset. It's very logical. Why we should exercise in the morning. It's very logical. So many hormones get released. Why we should turn off our phone, जो मैं बोलता हूँ. When your wise self takes the decision ना, मतलब your intellect, basically it's your intellect. तब आपके सारे decisions सही होते हैं. You value yourself. And बोलूँ ना, the moment you start connecting with your preciousness, the moment you start connecting with your preciousness, when you realize your true value, आपकी कीमत क्या है, for your family, for your friends, for the society, and for the humanity in general, you start treating yourself differently. You start treating yourself differently. You know that yes, Manish is so precious, Ekta is so precious, Pooja is so precious. हमें पता चलता है कि हम कितने precious हैं. We all are so precious. गया. You won't touch junk ever in your life. कभी खाएंगे भी ना तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि दिस शुड नॉट बी डन. योर वाइस सेल्फ सामने आ जाएगा, इंटेलेक्ट सामने आ जाएगा. ओके, सो कम, let's practice some breathing exercises and then we start with exercises. Okay, so I'm just planning, as थोड़ा सा extend हो गया concept because it was very important, but we will class will be divided into three parts now: the concept part, the pranayam part, meditation part, and then we will do. Okay, so just change your position, whatever position जो नीचे बैठे हैं खास करके, just change your position. Maybe you can sit on a chair or vajrasan, because it's not too good to sit for a long period of time. So if possible, change your position. नहीं है तो comfortable रहिए, whatever position you are comfortable in. Remove your spectacles, चश्मा उतार दीजिए. So let's go into the green zone. Let's go into the green zone. So green zone, as we understood, is activating our parasympathetic nervous system, जो हमने कल सीखा. I'm sorry, जिनको मैं लिंक भेजना भूल गया था कल का, I'll send you the recording. Do see the session on the science of stress that we discussed yesterday. So let's activate our PSNS. उसके लिए आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा. अगर नीचे आपके लिए अनकंफर्टेबल है, आप चेयर पे बैठ जाइए. You should not be stressed about sitting down. You can take a back support if you want. Your hands relax on the thighs, elbows close to the body. Roll your shoulders slightly back. थोड़ा सा shoulder को roll back करिए. Take your chest out, तो spine थोड़ा और erect हो जाएगा आपका. Keep your chin parallel to the ground. Just take the attention to your breath. And just repeat the affirmation in your mind. I am precious. Just connect to this statement in whatever way you can. Whether it's for yourself, whether it's for your spouse, your siblings, your parents, your children, your bosses, your employees, your clients. So many relationships we have. We live in an interdependent reality wherein so many things in the universe are dependent on you. This world is incomplete without you. दुनिया को आपकी जरूरत है, आपके फैमिली को आपकी जरूरत है. Just connect with the preciousness of you.
And एक संकल्प लीजिए आज, take a strong resolve that whatever we are learning through these classes, through other teachers, take a strong resolve to start making small daily improvements in your routines, in your lifestyle, in your diet, just because you know that you are here for a larger purpose. That purpose may or may not be clear to you right now. Keep looking for it. Connect with the divinity within you, that we all are divine. And the only way to express your divinity is by living your life in a way where you express your true potential. Just inhale deeply once and exhale through your mouth. So inhale, so exhalation should be longer, inhalation should be shorter. Do it 5 times on your own. Inhale, short inhalation, long exhalation. Inhale, inhale, one last time. Inhale, normal breathing. Just observe the state of your mind by doing this simple practice of longer exhalation, how your thoughts have settled down. Again, take the attention to your breath. Just observe. Do not try to control your breathing. Just observe the incoming breath and outgoing breath. And this time, connect with the life force within you. Be grateful to the universe for giving you one more day to live. You are blessed to be alive today. This day is opportunity to showcase your skills to the universe. Whether you are a doctor, whether you are an engineer, whether you are a businessman, whether you are a housewife, it's an opportunity to be your best. And it's our duty to take care of our body so that we can perform at our best. Let's start with Om chanting. So inhale deeply and exhaling whatever way you know you can chant Om. So inhale. Don't be in a hurry. Just let your breathing settle down. Inhale once again and exhaling.
One last time. Inhale. Just be with the vibrations. We start with a prayer. So join your palms in Namaste at the center of your chest. Asato ma satgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityurma amrutangamaya. Shanti, shanti, shanti. See how your breathing has settled down. Your thoughts so much pure. Just connect with the divinity within you, your true self, that you are not this body, you are not this mind. हम उस परमात्मा के अंश हैं जो ये संसार चला रहा है. ये समझ के अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए. Yes. Life should not be a struggle. Life should be effortless. Slowly and gently rub your palms. Rub your eyes. And start by blinking your eyes. धीरे धीरे blink करिए. And gently open your eyes. Good morning. Come. Don't be in a hurry to get up. You are in such a relaxed state. तो बहुत झटके से हमें बॉडी मूव नहीं करना है, शेक नहीं करना है. So this is what we learned about going into the green zone. So what this does is it cures, I mean the word cures you at the cellular level. जो जो बोलते हैं ना कि बीमारियां रिवर्स कैसे होती है when you are relaxed. So this is the relaxation response that we just practiced. This was one of the forms of relaxation practices. This we should do every 2 hours. हर 2 घंटे में करना चाहिए. Either focus on the breath or do some guided meditation. YouTube पे भरे पड़े. You don't need to buy any app or anything. Just go to the YouTube. There are thousands of guided meditations. I can share few in the group. But do this every 2 hours for your well-being. Okay? Come. I just stop the recording. The web becomes too long. Open your legs in front. जो जमीन पे बैठे हैं ना, just open your legs in front.